Hello tiny tots, welcome to Magnet Brains. This is Tess and Ajos and we are doing our unit 5. है ना? We have done our poem, now we are doing a story. So it's a story about, पता है किसके बारे में? It's about circle. Have you seen a circle? Okay, look around yourself. How many circles can you find? अपने आसपास देखो क्या क्या आपको सर्कल सर्कल चीज़ें दिखती हैं? The sun is a circle, the moon is a circle, then और क्या circle है? आपके वॉल्स पे क्लॉक होगा, दैट इज अ सर्कल. देन व्हाट एल्स? अ बॉल इज अ सर्कल, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर सर्कल अराउंड यू. सो हैव अ लुक अराउंड योरसेल्फ, आसपास देखना एंड नेम वॉट एवर थिंग्स दैट यू फाइंड आर सर्कल. ठीक है? सो द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर. एक बच्ची है एंड उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी नानी या दादी. ये दोनों साथ में मिलके दे क्रिएट अ लॉट ऑफ सर्कल्स. सर्कल पता चल गया ना? यू नो अ सर्कल, राइट? सो ग्रैंडमा और जो लड़की है दे बोथ ड्रॉ अ सर्कल. आफ्टर दैट दे ड्रॉ मेनी थिंग्स आउट ऑफ दैट सर्कल. एक सर्कल बनाने के बाद उसमें से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं ये लोग. सो लेट्स सी. ठीक है? सो द स्टोरीज नेम इज सर्कल एंड हु इज द ऑथर? Manorama Jaffa. Manorama Jaffa. As I always say, please open your textbooks, read along with me and learn the name of the author. ठीक है? ऑथर का नाम याद करो एंड मैम के साथ साथ स्टोरी रीड करना. ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. ओके. वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विथ हर grandmother. What's the name of the girl? Mohini. What's the name? Mohini. One day, Mohini was sitting with her grandmother. एक दिन मोहिनी अपनी ग्रैंडमदर के साथ बैठी हुई थी. ग्रैंडमदर ड्रू अ सर्कल. ग्रैंडमदर ने एक सर्कल बनाया. ठीक है? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी? एंड देन शी आस्क्ड मोहिनी. उन्होंने मोहिनी से पूछा, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल? यस आई कैन. Soon मोहिनी ड्रू अ सर्कल. जैसे ही ग्रैंडमदर ने पूछा कैन यू ड्रॉ अ सर्कल, मोहिनी ने क्या बोला? यस आई कैन. क्या मैं बना सकती हूँ सर्कल? एंड उसने जल्दी से एक सर्कल बना के दिया ग्रैंडमा को. नाउ आई ड्रॉ अ बॉल. ग्रैंडमदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल. अब ग्रैंडमदर ने क्या बोला? ठीक है, अब सर्कल तो बन गया है. नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल. हाउ डिड शी ड्रॉ अ बॉल? अब सर्कल, ग्रैंडमदर ने पहले सर्कल बनाया. ओहो, मैम का सर्कल तो बन ही नहीं रहा. चलो लेट्स ट्राई अगेन. ग्रैंडमदर ने पहले एक सर्कल बनाया. ओके, कुछ कुछ सर्कल. एंड देन शी ड्रू 3 लाइन्स. उन्होंने 3 लाइन्स बनाई. 1 2 3. Can you see the ball? So that's the ball that grandmother made. ठीक है? ग्रैंडमदर ने ऐसा बॉल बनाया. ठीक है? She drew a circle. After that she drew 3 lines and made a ball. Mohini drew 3 lines on her circle. It really looked like a ball. अब ग्रैंडमदर ने जैसे ही लाइन्स बनाई वैसे ही मोहिनी ने भी 3 लाइन्स बनाई. ठीक है? जैसे ही ग्रैंडमदर ने 3 लाइन्स बनाई वैसे ही मोहिनी ने भी 3 लाइन्स बनाई. एंड शी, जो ड्राइंग उसने किया, इट लुक्ड रियली लाइक अ बॉल. वो सच में बॉल जैसा दिख रहा था. नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून. नाउ जस्ट अभी क्या बनाया? दे ड्रू अ बॉल. बोथ ऑफ देम ड्रू अ बॉल. अब ग्रैंडमदर ने क्या बोला? लेट्स ड्रॉ अ बलून. Grandmother added a zigzag line to the circle. ग्रैंडमदर ने क्या किया? सर्कल बना के उस पे zigzag lines ऐड की. Like if this was her circle, उन्होंने उसके साथ zigzag lines ऐड कर दी. zigzag मतलब whoosh whoosh whoosh. That's zigzag. ठीक है? So ग्रैंडमदर ने क्या किया? एक और सर्कल बनाया एंड उस पे zigzag lines ऐड कर दी. एंड शी हैड अ बलून.
So first circle में she added 3 lines and she made a ball. Second circle में she added a zigzag line and she made balloon. ठीक है? Oh, it really looks like a balloon. Mohini clapped with joy. Mohini देख के एकदम खुश हो गई. She clapped with joy and said, "Oh, it really looks like a balloon. ये तो सच में balloon जैसा दिखता है." Mohini drew many circles, big and small circles. Mohini ने क्या किया? She drew a lot of circles. उसने बहुत सारे circles बनाए. बड़े circles, छोटे circles, red, blue, green and yellow circles. Now she added colors also. Which colors? Red, blue, green and yellow. ठीक है? 4 colors. She also added zigzag lines to these. उसने पहले circles बनाए, then colors किया and different size of circles. छोटा circles, बड़ा circles, medium circles and then उसको color किया and after that she added zigzag lines to it so that she has a lot of balloons. And now there were many balloons and now उसने इतने सारे balloons बना दिए थे. Can you draw something else with a circle? Asked grandmother. A ball बना लिया, they made a balloon. Now grandmother asks, can you draw something else with a circle? क्या तुम circle के साथ कुछ और बना सकती हो? Yes, said Mohini. हाँ मैं बना सकती हूँ. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. What all did she make? A wheel. Wheel मतलब पहिया. Have you seen a wheel? Cart का wheel होता है ना? A wheel. She made a wheel. That's a wheel. ठीक है? Tire और wheel is different. ठीक है? That's a wheel. फिर क्या बनाया? Moon बनाया. फिर क्या बनाया? Sun. She made sun. What else can you make with a circle? She made a rabbit and she made her own face. उसने rabbit बनाया and she made her own face. How must have she made her own face? एक circle, hair, eyes, nose and a big smile. Right? So that's how she made her own face. And how did she make a rabbit? A circle, 2 ears, a mouth, whiskers, 2 big eyes. And that's how she made a rabbit. ठीक है? So what all can you make with a circle? You can make sun, you can make moon, you can make your own face, you can make wheel, you can make a tire, you can make a clock, you can make a balloon, you can make a ball, you can make a rabbit. ठीक है? It's a big list. एक circle के साथ you can make a lot of things. है ना? So we've done this, right? She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. ठीक है? Now that was all in this story. Now we'll rewind it. ठीक है? We'll read it once more and we'll rewind it. One day Mohini was sitting with her grandmother. Grandmother drew a circle. Can you draw a circle, Mohini? Yes, I can. Soon Mohini drew a circle. Mohini and her grandmother, वो दोनों एक दिन एक जगह बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे. And grandmother, what does she do? She makes a circle and asks Mohini if she can draw a circle. Mohini says, yes, I can, and she draws a circle too. Now I'll draw a ball. Grandmother drew 3 lines in the circle. Mohini drew 3 lines on her circle. It really looked like a ball. Now let's draw a balloon. Grandmother added a zigzag line to the circle.
दोनों ने जब बॉल बना लिया, आफ्टर दैट व्हाट ग्रैंडमदर डज, शी नाउ मेक्स अ सर्कल एंड एड्स zigzag lines to it and says, yeah, now I have made a balloon. Mohini saw this and she does the same, and now she has also made balloons. Oh, it really looks like a balloon. Mohini clapped with joy. Mohini जैसे उसने balloons देखा, she was very happy and she clapped with joy. Mohini drew many circles, big and small circles. Now Mohini makes a lot of balloons, small, big, medium and different colors, red, green, blue and yellow balloons. She also adds zigzag lines to them. And now there are many balloons. Can you draw something else with a circle? Now grandmother asks her, balloon and ball to हमने बना लिया. Can you make something else with the circle? Yes, said Mohini. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit and her own face. ठीक है? So what all extra things did she make? She made a rabbit, she made a moon, sun and a wheel. ठीक है? So that's your story. The story is about Mohini and her grandmother. Mohini's grandmother teaches her to draw a circle. Story is about, story किसके बारे में? Mohini and grandmother. And grandmother उसको क्या सिखाती है? To make a circle. Once Mohini draws a circle, her grandmother teaches her how to draw balloons and balls out of it. जैसे ही मोहिनी ने सर्कल बना लिया, ग्रैंडमदर ने उसको क्या सिखाया? She taught her to make a ball and a balloon with the circle. Now Mohini draws many colorful balloons. Apart from that, she also draws sun, moon, rabbit and her own face with the circle. अब जैसे ही उसने बॉल और बलून बनाना सीख लिया, now मोहिनी क्या करती है? She learns to make a wheel, sun, moon, rabbit and her own face with a circle. So you can do a lot of things with a circle. है ना? पता था इससे पहले कि आप इतना सारा चीज़ें कर सकते हो. So let's see the new words. B-A-L-L ball, B-A-L-L ball. B-L-U-E blue, B-L-U-E blue. C-I-R-C-L-E circle, C-I-R-C-L-E circle. L-I-N-E-S lines, L-I-N-E-S lines. M-O-O-N moon, M-O-O-N moon, right? So while reading the chapter, you can just underline any other word that you feel is difficult and you can learn it. ठीक है? Chapter में अगर आपको और कोई word लगता है कि आपको difficult है, you can underline it and learn the spellings. Now we have the question answers. What did grandmother and Mohini draw first? सबसे पहले इन दोनों ने क्या start किया था? Mohini and grandmother drew a circle first. सबसे पहले क्या बनाया था? Circle. After that ball, balloon, फिर बहुत सारी चीजें. So Mohini and grandmother drew a circle first. What were the colors of the balloons that Mohini drew? Mohini ने बहुत सारे balloons बनाए थे ना? So what were the colors that she used? Red, green, blue and yellow. Red, green, blue and yellow. R-E-D red, G-R-E-E-N green, B-L-U-E blue and Y-E-L-L-O-W yellow. ठीक है? What grandmother drew, what Mohini drew. Let's draw. Okay. Now if you want, you can draw a ball and a balloon.
or you can draw two different type of balls, two different type of balloons. It's all up to you. ठीक है, आपको बताना है कि पहले ग्रैंडमदर ने क्या बनाया, उसके बाद मोहिनी ने क्या बनाया. अब दोनों ने बॉल्स भी बनाए थे, बलून्स भी बनाए थे. तो इट्स ऑन यू. इफ यू वांट यू कैन मेक अ बॉल, यू कैन मेक अ बलून, वॉट एवर यू वांट. ग्रैंडमदर में सिर्फ बॉल या फिर बलून आएगा. मोहिनी में यू कैन मेक एनीथिंग. ठीक है. सो फॉर ग्रैंडमदर यू कैन जस्ट मेक अ बॉल, एंड फॉर मोहिनी देयर आर बॉल, देयर इज बॉल, बलून, बहुत सारी चीजें. सो ठीक है. फॉर मोहिनी यू कैन मेक बलून, बॉल, रैबिट, सन, मून, wheel, own face, anything. And for grandmother you can only make ball या फिर balloon. ठीक है. You can draw it and then you can color it अच्छे से, सुंदर सुंदर. ठीक है. Next, draw faces on the balloon as shown. You have a face on a yellow balloon. You have to just redraw it. आपको वो देखना है and again draw करना है. So if you want you can make a new face. कुछ भी funny सा face बना सकते हैं, या फिर you can make the same thing. ठीक है. It is easy actually. देख के लगता है कि it's hard. You can just how does it look? It looks like a pirate, है ना? Who's a pirate? समुद्र के लुटेरे. ठीक है. So there you go. Done. ठीक है. You just have to color it. You can make any face you want. ज़रूरी नहीं है कि आप जो वहाँ बनाए वही यहीं पे बनाओगे. You can draw a funny face, you can draw an angry face, you can draw a sad face. कोई भी face बना सकते हैं. And ज़रूरी नहीं है कि expression ही हो. Like यहाँ पे pirate है, you can make a clown, you can make और क्या बना सकते हो? You can make a magician. ऐसे बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. If you want, इसके मुंह में एक सिगार पकड़ा सकते हो, या फिर you can change the colors. He has a mustache, you can make a beard. ठीक है. कुछ भी. It's all on your imagination. ठीक है. मैम ने सिर्फ बताने के लिए ये कर दिया. Right? So look at the picture and fill in the blanks. Next. Okay, you have some animals. You have to write their names. कर सकते हैं? All simple animals, you know all their names, right? So let's start off with the first one. First one is a dog. D-O-G. D-O-G, dog. Next is a bull. B-U-L-L, bull. Next is elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Next is owl. O-W-L. O-W-L. Horse. H-O-R-S-E, horse. H-O-R-S-E, horse. C-A-T, cat. ठीक है. So C-A-T, cat. H-O-R-S-E, horse. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. D-O-G, dog. B-U-L-L, bull. कोई रह गया? Owl. O-W-L. So you can learn these spellings also. C-A-T, cat.
HORSE horse, ELEPHANT elephant, DOG dog, BULL bull, OWL owl. ठीक है? So these are some animals. So you've understood the story and you are doing it with me. So that was all in this story. Easy tha na? And you have a lot of drawing, coloring in this story. If you want, you can make some new balloons, some new balls and a lot of things with circle. You can actually. जब story read कर लोगे सारे exercises खत्म हो जाएंगे ना, so take a paper and draw whatever you can with a circle. ठीक है? Use your imagination, create whatever you can with a circle. And it's not necessary कि जो चीज़ें आपके सामने हैं या फिर जो आप actually देखते हो उसी चीज़ का circle से बनाना है. You can use your imagination, make anything. Make stars with circle, make spaceship with circles, make sea animals with circles. ठीक है? Use your imagination, use your creativity and create whatever you can. So, I hope आपने story भी read कर लिया. You have done the difficult words, done all the exercises with me and keep your textbooks clean, use a sharpened pencil. ठीक है? Till we meet next, take care. Bye bye.